Hello everyone, I am Dr. Swati Stacey dealing with oral pathology, developmental disturbances of lip and palate. Cleft lip and cleft palate, two types. Cleft lip, cleft palate. Congenital malformation. Malformation, failure in the fusion of the nasal and maxillary process. Nasal and maxillary process. Unilateral और bilateral. अब हम लोग आएंगे इसके एटियोलॉजी में. हम लोग आए इसके एटियोलॉजी में. अकॉर्डिंग टू मेनी साइंटिस्ट सच एज फॉग एडरसन, ये क्या है? क्लेफ्ट लिप पैलेट 40% ऑफ केसेस. आइसोलेटेड क्लेफ्ट पैलेट 20%, slightly less than 40% of cases and slightly less than 20% of cases. Now हम लोग दूसरे साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे. भाटिया के बारे में. भाटिया जी बताया मोड ऑफ ट्रांसमिशन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन. सिंगल म्यूटेंट जीन. सिंगल म्यूटेंट जीन number of genes polygenic inheritance. और हम लोग नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में आएंगे. इन्होंने दो दिया है, एक पॉलीजेनिक क्लेफ्ट्स only, second is monogenic or syndromic. Other congenital anomaly. अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में. नेक्स्ट साइंटिस्ट है स्टेन एंड प्योर. इसमें ये क्या होता है? फिजियोलॉजिक इमोशनल और ट्रॉमेटिक स्ट्रेस अकर करता है क्लेफ्ट पैलेट. क्यों? क्योंकि स्ट्रेस इंड्यूस करता है इंक्रीज्ड function of the adrenal cortex. Increased function of adrenal cortex. तो ये क्या करेगा? तो and then secretion occur of hydrocortisone. Secretion of hydrocortisone. तो क्या होगा? क्लेफ्ट पैलेट. अब हम लोग नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे. साइंटिस्ट में है फ्रेजर एंड बार्बिटॉन. ये अदर फैक्टर्स cause cleft lip or palate. A defective vascular supply to the area involved. A defective vascular supply to the area involved. Defective vascular supply to the area involved. A mechanical disturbance. A mechanical disturbance. Next is circulating substance such as alcohol, certain drug and toxin. Infection and lack of inherent development of force. Lack of inherent
डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंटल फोर्स। अब हम लोग आएंगे क्लिनिकल फीचर में। क्लिनिकल फीचर में क्लेफ्ट लिप ऑफ पैलेट मोस्ट कॉमन होता है किसमें, मेल में, और आइसोलेटेड क्लेफ्ट पैलेट मोस्ट कॉमन इन फीमेल। क्लेफ्ट्स जो है टू टाइप का, नॉन सिंड्रोमिक, सेकंड इज सिंड्रोमिक। नॉन सिंड्रोमिक में आपका आ गया क्लेफ्ट लिप और पैलेट और आइसोलेटेड क्लेफ्ट पैलेट, और सिंड्रोमिक में हो गया आपका लिप पिट और अदर माल फॉर्मेशन। अब हम लोग आगे आएंगे, हम लोग क्लिनिकल फीचर में आए। क्लिनिकल फीचर में रिमेनिंग सिंड्रोम केसेस, सब डिवीजन है इसका, सब डिवीजन इनटू क्रोमोसोमल एनोमलीज, क्रोमोसोमल एनोमलीज, टेराटोजेंस and uncategorized syndrome. Uncategorized syndrome. अब देखिए इसमें क्या है, क्लेफ्ट इन्वॉल्विंग बोथ हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, ये क्लेफ्ट है। नाउ आइसोलेटेड क्लेफ्ट में क्लेफ्ट बाइफाइड क्लेफ्ट एंड बाइफाइड एवियोला। अब हम लोग आएंगे, मिलर एंड कोवर्कर ने क्या बताया, मीडियन क्लेफ्ट फेस सिंड्रोम, मीडियन क्लेफ्ट फेस सिंड्रोम, हाइपरटैलोरिज्म, median cleft of the premaxilla, median cleft of the premaxilla and palate and cranium bifidum occlutum, cranium bifidum occlutum। हम लोग नेक्स्ट आएंगे, नाउ हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्लेफ्ट लिप पैलेट। तो इसमें क्या है, वेरियस क्लासिफिकेशन, जिसमें से कि 4 क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेड स्कीम का हम दिखाएंगे। पहला है डेविड्स एंड रिचर्ड, जिसमें ग्रुप 1 में है क्लेफ्ट एंटेरियर टू द एल्वियोलस, इसमें यूनिलैटरल, मीडियल एंड बायलैटरल क्लेफ्ट, यूनिलैटरल, मीडियन and bilateral cleft. Group 2 is post-alveolar cleft, जिसमें cleft palate alone, soft palate alone,
soft palate and hard palate, soft palate and hard palate, or submucous cleft, submucous cleft. ये क्लेफ्ट था, क्लेफ्ट टू एंटेरियर टू द एल्वियोलस, जिसमें यूनिलैटरल, मीडियल एंड बायलैटरल. ग्रुप 2 में आ रहा है पोस्ट एल्वियोलर क्लेफ्ट, जिसमें क्लेफ्ट पैलेट अलोन, सॉफ्ट पैलेट अलोन, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट, और सबम्यूकोस क्लेफ्ट्स. अब हम लोग नेक्स्ट साइंटिस्ट 1 इज रिलेटेड टू डिफेक्ट्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, डिफेक्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट. Group 2B is defect involving the hard palate and soft palate. Hard palate and soft palate. Group 3 involving the soft palate to alveolus. Defects involving soft palate to alveolus. Alveolus. Usually involving the lip. Usually involving the lip. And group 4 is complete bilateral cleft. Group 4 is complete bilateral clefts. Now come next class. हम लोग नेक्स्ट आए हैं Kerner and Stark symbolic classification. The anatomic and embryonic importance of the incisive foramen formed during 4th to 7th week of gestation. The secondary palate forms the roof of the mouth from the incisive foramen to the uvula during 7 to 12 week of gestation. 7 to 12 week of gestation. अब हम लोग आए ग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम यूजिंग वाई कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड इनटू 9 एरियाज. एरिया 1 and 4 लिप, एरिया 2 and 5 alveolus, area 3 and 6 palate between the alveolus and incisive foramen, alveolus and incisive foramen, and area 7 and 8 is hard palate, area 9 is soft palate. Now coming next classification, International Confederation of Plastic and Reconstructive Surgery classification. Embryonic framework to divide group 1 defects of the lip and alveolus, Group 2 clefts of secondary palate, hard palate and soft palate, or both. Group 3 is any combination of clefts involving the primary and secondary palate. Primary and secondary palate. अब हम लोग आएंगे ट्रीटमेंट में. हम लोग आएंगे अब ट्रीटमेंट में. ट्रीटमेंट में क्या है? ट्रीटमेंट में है सर्जिकल, डेंटल एंड स्पीच थेरेपी. फर्स्ट लिप सर्जरी जो होता है, फर्स्ट लिप सर्जरी depends on rule of 3 tenths. Rule of 3 tenths. पहला हो गया दैट इज, बता जैसे कि बता रहे, दैट इज 10 LB हेमोग्लोबिन, 10 mg per
and age 10 weeks. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे.